Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video. In this video, we will discuss a solved example with reference to line balancing algorithm. Line balancing problems are available in chapter number 15 of MP Gruber book. So you can practice on them. This is a solved example, example 15.1, and we are going to discuss this one. So in the problem, this table is given to you, which shows basically a list of different operations that will be performed in assembling a product. And this product is an electrical appliance which will be assembled in an assembly plant, and a total of 12 operations are involved in this particular scenario. 12 operation means 12 assembly operations. The operation descriptions are available कि क्या operation हो रहा है, and then the TEK values are also given. TEK is basically the operation times. So अगर first operation को आप देखें तो इसका total processing time जो है वो 0.2 minutes है, and so on. Similarly, fourth column को अगर आप देखें तो it gives you the list of predecessors for each of the operation. Like for example, operation number 1 and operation number 2 को अगर आप देखें, so they have no predecessor. This means that these two operations are independent operations, and you can start them at any time, and you can assign these operations to any of the workstation, either independently or simultaneously. So ये दोनों operations जो है आप simultaneously एक workstation को भी assign कर सकते हैं, because none of them are dependent on some other operations. However, from 3 to 12 अगर आप देखते हैं तो every operation has some predecessors. Like operation number 3 has a predecessor 1. So you cannot assign, in other words, you can say that you cannot start operation number 3 unless operation number 1 is completed, and so on. Fourth को अगर आप देखें तो इनके predecessor जो है वो 1 और 2 है. So fourth operation cannot be assigned to any of the workstation until you have completed operation number 1 and 2. Okay? So ये basically these predecessors provide you the sequence of operation, that in which sequence you will perform the tasks. From this table, you will generate the precedence diagram, which shows the graphical representation of those work elements. Work elements means those operations, and the sequence in which those operations must be performed. And this is the problem statement with that particular table, which gives you the necessary data, that what is the annual demand or available time क्या है, और उसकी बेसिस पे आपने परफॉर्मेंस मेजर्स जो है वो फाइंड करने होंगे. So let me start the presentation. I will just read out the problem statement first, and then we will further discuss it. So we have a small electrical appliance that has to be produced on a single model assembly line. So as discussed in the previous video, that we will only be discussing single model assembly lines. Single model assembly lines are for mass production setups, in which only one type of product will be produced. Okay? So there are problem also available with reference to mixed model assembly line, जिसको बैच प्रोडक्शन आप कहते हैं, या जॉब शॉप सिनारियो में, तो वो आपके कोर्स में नहीं है. ठीक है ना. सो वी विल बी ओनली कंसर्न विद सिंगल मॉडल असेंबली लाइन. सो चैप्टर नंबर 15 में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं लाइन बैलेंसिंग के, तो उसमें आपने जो सिंगल मॉडल असेंबली लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करने होंगे.
So the work content of assembling the product has been reduced to the work elements listed in the table below. वो टेबल मैंने आपको बताया, उसमें वर्क कंटेंट अभी हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ बेसिकली समेशन ऑफ ऑल द ऑपरेशंस, जितने ऑपरेशंस होंगे. सो इन दिस केस वी हैव 12 ऑपरेशंस, और उन सब 12 ऑपरेशंस को डिवाइड किया गया है कैटेगरीज में, और उसकी लिस्ट जो है वो प्रोवाइडेड है टेबल में along with the operational times and the predecessors. The line is to be balanced for an annual demand of 100,000 units per year. So you should note this statement. The line is to be balanced. आपने इस लाइन को बैलेंस करना है, ठीक है ना, और बैलेंसिंग एल्गोरिथम जो है वो आपने यूज़ करना होगा, ठीक है ना. सो दिस इज़ दीज आर अदर पैरामीटर्स दैट यू हैव टू फाइंड. यानी डिटरमिन के बाद ए आपने फाइंड करना होगा, बी, सी और डी, ई. In addition to that, you will also finally have to balance the line. और डिमांड रेट जो है वो अवेलेबल है 100,000 यूनिट्स पर ईयर जो है डिमांड है. तो ये आपने अचीव करनी होगी थ्रू यूर डिज़ाइन. द लाइन विल बी ऑपरेटेड 50 वीक्स पर ईयर, 5 shifts per week and 7.5 hours per shift. This is the total available time that you have to achieve this demand. So बाज़ औक़ात जो है वो वीक्स दिए होते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो आपको डेज़ दिए होंगे, शिफ्ट्स दिए होंगे, ठीक है ना. सो इट विल डिपेंड ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम. नॉर्मली वीक्स जो है वो पर ईयर 50 वीक्स होते हैं, वर्किंग वीक्स, ये स्टैंडर्ड है. सो 50 या 52. सो अगर प्रॉब्लम में ये गिवन ना हो तो देन यू विल टेक आइदर 50 और 52, वो आपकी मर्ज़ी है, फिर जो भी आप फिगर लेते हैं. मैनिंग लेवल विल बी 1 वर्कर पर स्टेशन. सो मैनिंग लेवल जो है वो 1 वर्कर पर स्टेशन है. सो दिस मीन्स दैट if the total number of workers are 5, this means that you will have 5 workstations. So जब आप total workers find कर लेंगे तो eventually that will be your desired workstation also. So M is equal to 1 in this case. Previous experience suggests that the uptime efficiency for the line will be 96%. So line losses are also given. 4% जो है वो लाइन लॉसेस है. So the actual efficiency of your system is basically 0.96. So 0.4 जो है वो डिलेज हैं आपकी. Repositioning time lost per cycle will be 0.08 minute. So repositioning time भी given है TR. तो लास्ट वीडियो अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि if the repositioning times are given, so then you will have to subtract that from the theoretical cycle time of the system, जो कि TC होगा, जो कि आप फाइंड करेंगे, ना. So first you will find the cycle time, the theoretical cycle time, that will be TC, और उससे फिर आपने ये repositioning time जो है वो subtract करके आपके पास जो एक्चुअल अवेलेबल टाइम सिस्टम में आपको मिलेगा वो आपका आ जाएगा टी विद अ प्रीफिक्स एस, जिसे आप टी एस कहते हैं, स्टेशन टाइम या सर्विस टाइम. डिटरमिन टोटल वर्क कंटेंट टाइम, यानी जो टोटल ऑपरेशंस हैं उनका कलेक्टिव टाइम क्या होगा, TWC से हम डिनोट करते हैं. बी इज़ द रिक्वायर्ड आवरली प्रोडक्शन रेट to achieve that particular annual demand of 100,000 units per year, ठीक है ना. सो RP आपने फाइंड करना है, एंड अकॉर्डिंगली आपके पास साइकिल टाइम जो है वो आ जाएगा. बिकॉज RP और साइकिल टाइम का जो मैंने रिलेशन आपको बताया था इन्वर्स रिलेशन है. तो TC इज़ इक्वल टू 1/RP या RP इज़ इक्वल टू 1/TC. और अगर लाइन लॉसेस गिवन है तो फिर आप जो है वो उस E फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हैं. एंड वन थिंग मोर दैट आई discussed in the previous video is that normally the cycle times are given in minutes, and standard
जो प्रोडक्शन रेट के लिए है, वी नॉर्मली कैलकुलेट प्रोडक्शन रेट इन टर्म्स ऑफ आवरली बेसिस. So you have to keep that particular scenario in mind, that if the cycle times are given in seconds or minutes, so you will have to convert that into hours. So आपने साइकिल टाइम फाइंड करना है, फिर और सर्विस टाइम आपने फाइंड करना होगा टी एस, क्योंकि टी आर की वैल्यू गिवन है विच इज़ 0.08 मिनट. सो फर्स्ट यू विल फाइंड टी सी एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट that TR from the cycle time, and you will get the TS value. So let me go back to the list of the table that is provided. So sometimes you will be given directly the precedence diagram. जो graphical representation है वही आपको given होगी, and from that you can easily extract this table. और अगर टेबल गिवन है, सो यू कैन इजीली एक्सट्रैक्ट दिस प्रेसिडेंस डायग्राम फ्रॉम द टेबल. ठीक है ना. सो या तो आपको टेबल गिवन होगा या आपको प्रेसिडेंस डायग्राम गिवन होगा. सो सपोज you have a table and you want to generate the precedence diagram. So just look into the operations, and within those look for the independent operations that you can assign at any time without any reservation. So we have two operations that they have no predecessors, which is operation number 1 and 2. So this means that we can start with operation number 1 and operation number 2. So similarly, other elements. So work element number 1 को अगर आप देखें और work element number 2 को अगर आप देखें, तो I can start drawing the precedence diagram from these two work elements, क्योंकि इनका कोई predecessor नहीं है. ठीक है. So 1 और 2 जो है वो मैं graphically show कर दूंगा, and then later on I can assign these two independent operations either to single workstation or two separate workstations. So that will depend upon the scenario and other factors. सो बीच में जो सेंटर में नोट के है वो वर्क एलिमेंट्स हैं आपके, ऑपरेशन नंबर्स बता रहा है, एंड द फिगर अबव द नोट गिव्स यू द ऑपरेशन टाइम ऑफ दैट पार्टिकुलर वर्क एलिमेंट. ठीक है ना. सो वर्क एलिमेंट नंबर 1 और वर्क एलिमेंट नंबर 2 जो है वो आप सिंपली ड्रा कर लेंगे. देन वर्क एलिमेंट नंबर 3 को अगर आप देखें तो it has a predecessor which is operation number 1. So I will make another node with label 3, and its predecessor is 1. So I will simply join work element number 1 to element number 3. Similarly fourth element को अगर आप देखें तो इसका predecessor जो है वो 1 और 2 है. So I will make another node which is node number 4, and इसके जो predecessors हैं वो operation number 1 और operation number 2 है. So I will make two arrows connecting work element number 1 and 4, and then 2 and 4. ठीक है ना. So 1 और 2 इसके predecessor हैं. Similarly fifth को अगर आप देखें तो इसका 2 है, तो मैं fifth का जो है वो सिर्फ 2 के साथ कनेक्ट कर लूँगा. सिमिलरली 6, 7 और 8 को अगर आप देखें तो 6, 7 और 8 का 6 और 7 के प्रीडिसेसर जो है वो 3 है, और 8 का अगर आप देखें तो दैट इज़ 3 and 4. सो 6 का 3 है, 7 का 3 है, और 8 को अगर आप देखें सो इट्स प्रीडिसेसर्स आर 3 and 4. एंड सिमिलरली you will finalize the precedence diagram. So this is basically a graphical representation of all the operations, and through this graphical representation you can easily look for the sequence of operations के कौन सा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वर्क एलिमेंट 10 को देखूँ तो very clearly I can see that I cannot start operation number 10 unless and until
operation number 8 and 5 has been completed, ठीक है ना. और फिर 8 को अगर आप देखते हैं तो 8 cannot be started or assigned before third or fourth operation, and similarly fifth cannot be assigned before operation number 2, ठीक है ना. So these arrows basically gives the sequence of those operations. Sequence means the dependencies of the operations on some other operations. Okay? So you have to keep these restrictions in mind while assigning the work elements to the workstations. So let me also briefly explain the line balancing technique. What we do in line balancing is that we try to allocate the workstation, allocate the operations to the workstations in such a manner so that every workstation gets an equal amount of work. जो कि वेटिंग टाइम्स हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हम इक्वल असाइनमेंट देते हैं मशीन्स को. एंड अगेन अ परफेक्ट बैलेंस विल नेवर बी अचीव्ड क्योंकि ऑपरेशन टाइम जो है वो डिफरेंट ही होते हैं, बट वी ट्राई टू मिनिमाइज द time differences between the workstations, and this can only be done if we equally distribute evenly. You can say not equally तो बिल्कुल नहीं हो सकता, evenly even distribution आपके पास होनी चाहिए. So ये मैंने आपको बता दिया है कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो गिवन डेटा है एनुअल डिमांड आपके पास अवेलेबल है, और उसको पूरा करने के लिए जो अवेलेबल टाइम है दैट इज़ गिवन विद अप टाइम एफिशिएंसी विद सम लाइन लॉसेस एंड रिपोजिशनिंग टाइम. You have to determine the total work content time, the required hourly production rate, the cycle time, and the theoretical minimum number of workers has to be found out, because you will have to balance the line, and you will have to distribute the total operations among the workers or among the workstations. And finally service time आपने find करना होगा. So let us start with the solution. Total work content time को अगर आप देखें तो it is simply summation of all the work element times. So in this case we have in total 12 work elements. So K will be from 1 to 12. So TWC will be simply TE1 plus TE2 plus TE3 up to TE12, this table. So this is TE1, TE2, TE3, TE4 up to 12. Simply इनके जो ऑपरेशन टाइम है वो आप सम अप कर लें तो ये आपका TWC हो जाए, यानी टोटल कंटेंट टाइम आपके पास आ जाएगा. So this one, it comes out to be exactly 4 minutes work content time. Second आपने फाइंड करना है फिर प्रोडक्शन रेट, और प्रोडक्शन रेट मैंने आपको बताया था कि इट इज़ if the cycle time is given, so simply you can use the relative formula in between the production rate and cycle time. So RP will be equal to 1 by TC, और वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं. But in some cases like this one, if the cycle time and the production rates are not given, so you will look into the other parameters. और दूसरे parameters अगर आपको देखें तो production rate is basically efficiency of the manufacturing system, and manufacturing efficiency को अगर आप देखते हैं तो efficiency is simply output divided by input. Output of any manufacturing system or assembly system will be the total number of units that will be produced by that particular system. And here the demand rate is given, which is 100,000 units per hour per year.
So the total output of the system will be 100,000 units जो कि annual demand है. So आपका output जो है that is the annual demand, and to fulfill that demand, to achieve that demand, you have some available time. So during that time you have to complete that particular. So these are the input resources to complete your output. So output divided by input is the demand rate divided by the available time. And available time is 50 weeks into number of shifts on those 50 weeks, and then you have number of hours in one shift. So simply multiply them. So you will come up with the total available time. So put in the values, 100,000 divided by 15 to 5, 7.5. This data is available. So the production rate comes out to be 53.33 units per hour. And once you get the production rate, so you can then easily find the cycle time. So third is the cycle time. There is inverse relation between the production rate and cycle time. So TC is 1 divided by RP. But you have to calculate TC in minutes. So RP जो है वो hourly production rate है. So per hour है तो per hour को per minute पे जब आप convert करेंगे तो 60 आपका ऊपर चला जाएगा. So that is why we have this 60 figure in this formula. And similarly, the line losses are also given. So if the uptime efficiency is given, so again you have to multiply the cycle time with that factor also. So your theoretical cycle time comes out to be 1.08 minute using this particular formula. So अगर for example production rate आपके पास minutes में है, तो then it would be simply TC equals to 1 by RP. And if the efficiency, uptime efficiency or line efficiency is not given, so it would be then 1 by RP. अगर efficiency given है, so E by RP है. और अगर for example ये hours में है, तो then it is 60 by RP into E. So cycle time is 1.08 minute. As far as the number of workers are concerned, so worker का लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंपली जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन टाइम है, यानी उस टाइम को आपने अचीव करना है एक पर्टिकुलर साइकिल में, विच इज़ द साइकिल टाइम. ठीक है ना. सो टोटल work content time divided by the cycle time will give you an average number of workers that must be present within the system. So average number of workers means number of workstations, because manning level जो है वो 1 है. So if the number of workers like in this case is 4, this means that theoretically we should have 4 workstations also. So और number of workers या number of workstation जो होगा that will be some integer, and that integer must be equal to or greater than your calculated value. So if it is a round figure like for example 4 or 5, so वही value होगी. But if it is in fraction like in this case, if it is 3.7, so you will then jump to the next higher figure because you cannot reduce the number of workers. अगर 3.7 को आप 3 लेते हैं, तो this means that you are minimizing, you are reducing the number of workstations. So number of workstations जब आप reduce करेंगे, इसका मतलब ये है कि you are increasing the cycle time. And when you increase the cycle time, so this means that you are decreasing the production rate of the system, because cycle time and production rate has they have inverse relation. So and they directly affect each other. So if you increase the cycle time, production rate will be decreased. If you decrease the cycle time, production rate will increase. So if it is like for example 3.001, you will have to take you will have to jump to the next higher figure, which is 4. So theoretically the minimum number of workers for this system must be 4 workers,
or 4 workstations to achieve that particular demand, which is 100,000 units per hour per year. And then finally, once you find the cycle time, TC आपके पास आ गया है, so then you can use this formula. TS का मैंने आपको बताया था, जो सर्विस टाइम है या स्टेशन टाइम है, it is simply TC minus TR. TR गिवन है 0.08. सो आपके पास जो एक्चुअल अवेलेबल टाइम होगा दैट इज़ 1 मिनट. थ्योरेटिकली आपने फाइंड कर दिया है कि अगर ये प्रोडक्शन रेट आप अचीव करेंगे तो यू विल अचीव this particular demand, and for this production rate you must have a cycle time equal to 1.0 minute, but the actual cycle time that will be available to you after repositioning of the work pieces, after repositioning of the workers, the actual available time for machining will be 1 minute. So जो लाइन बैलेंसिंग फार्मूलेशन आप करेंगे, it will be based on this figure, on 1 minute, not on 1.08 minute. You remember this one. So theoretically, number of workers or number of workstation is 4, and then now you will find for the actual scenario जब आप लोड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या आपके पास आ सकता है. So these are the parameters that was asked, and then बैलेंस एफिशिएंसी जो है वो आपने फाइंड करनी होगी फाइनली जब आप लाइन को बैलेंस कर लेंगे. सो that we discussed earlier that it will be impossible to come up with a perfect balanced line having no losses. Losses होंगी, losses will definitely be there, and you will have some balance delays. और बैलेंस डिलेज को निकाल के जो एक्चुअल एफिशिएंसी आपके पास आएगी उसको बैलेंस एफिशिएंसी कहा जाता है. So your possible performance measure will be the balance efficiency, which is the work content time divided by the total available service time आपके पास जो होगा. ठीक है. So in this case you have the service time. So अगर repositioning time available नहीं है तो फिर आपका बैलेंस एफिशिएंसी जो होगा दैट विल बी TWC डिवाइडेड बाय TC. So for this example we will have TWC in total work content time divided by the service time. लाइन की जो बैलेंस एफिशिएंसी है दैट इज represented as E with a prefix B. सिंपल E जो है उसको लाइन एफिशिएंसी कहा जाता है, जो लाइन लॉसेस आपके पास आती है. बैलेंस एफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय E with a prefix small b. And as I said that balance efficiency will be the total work content time, यानी जो ऑपरेशनल टाइम है आपके पास, वी हैव 12 ऑपरेशंस and the total time of those 12 operation is 4 minutes for this example. So that 4 minute time, that 4 minute operational time will be achieved through certain cycle time which is in our case 1 minute. तो ये 4 मिनट का टास्क जो है वो आपने 1 मिनट में अचीव करना होगा. सो साइकिल टाइम को आप नंबर ऑफ वर्कर के साथ मल्टीप्लाई करके वो अचीव कर सकते हैं. सो जिस तरह इस केस में आपके पास टोटल वर्क कंटेंट टाइम जो है वो 4 मिनट्स है. सो वी हैव 4 एंड theoretically if we have 4 workstations, so we can achieve that with 1 minute cycle time. So 4 into 1 will be 1 and we will have a perfect balance which practically will not be possible. So theoretically जो है वो जो ideal conditions में आप calculation करते हैं तो you can come up with this solutions.
So anyhow, जो balance efficiency है that will be the total work content time divided by cycle time into number of जितने भी workers हैं या जो भी workstations हैं. So if it is equal to 1, this means that it will be a perfectly balanced line. But it will always be less than 1. For example, 0.9 होगा या 0.96 होगा या 0.90 होगा, ठीक है ना, अगर 90% है. And rest will be the delays. Delay is denoted by small d. So if balance efficiency is 0.95, this means that 0.5% जो है या 5% जो है वो delays होंगी. So balance delay will be 1 minus EB का जो भी आएगा. And then sometimes if let us say the balance efficiency is not given and directly you want to find the delay, तो EB जो है that equals to TWC divided by WTS, so simply put its value, so it will be 1 minus TWC by WTS. LCM निकाल के आपके पास ये आ जाएगा. So you can first find the delay and then rest will be the balance efficiency, or you can find the balance efficiency and remaining will be the delay. Again, if your D equals 0, this means that it will be a perfectly balanced line. They are complement of each other. EB plus D will always be equal to 1. So अगर आपके solution में E, B और D आपने find किए and if is not equal to 1, less than 1 है या greater than 1 है, this means that your solution is not correct. So you will have to revisit your formulation. So finally, you can find the balance efficiency independently. You will find the line losses, line efficiencies भी है, और आपके पास repositioning efficiency भी है अगर repositioning time है. So you basically have 3 types of efficiencies that you can come up with. Finally, अगर ये तीनों factors available हों आपके पास problem में हो, problem statement में, so then आपने ये तीनों find करके आपस में पे उसको collectively multiply करके एक average value जो है आपके पास आ जाएगी. So overall efficiency of the labor जो है वो factors हैं which reduce the productivity of the labor जो manual assembly line होगी. So line efficiency is basically denoted by E, and it is the availability of the line, the time for which the line will be actually available for operation. Repositioning efficiency is the repositioning losses, and it is represented as E with the prefix R, और बैलेंस एफिशिएंसी आपके पास है जिसको हम EB से डिनोट करते हैं. सो फाइनली अगर आपने ये तीनों कैलकुलेट करनी हो तो जो साइकिल टाइम और प्रोडक्शन रेट में जो रिलेशन है उससे आप E फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना. ये फार्मूला जो हमने यूज़ किया है अभी, you know, so we can find E. So E will be TC into RP divided by 60. EB, as I said, that it is equal to the total work content time divided by the cycle time and number of workstation. और ER जो है again it will be output by input, you know, so सब output by input है. तो losses को अगर आप देखें जो repositioning losses है तो ER will be यानी जो output is the actual time that will be available to you, which is the actual processing time, and that is denoted by TS. And input is the total available time, is the total available cycle time, जो आपका theoretically आपने find किया है TC.
So TS by TC will be the repositioning efficiency. And then you can put in the value of TC, TS, TS जो है वो TC minus TR है, जो कि earlier मैंने आपको बता दिया था. So either you can use this, अगर for example TS given ना हो, repositioning or cycle time given हो, तो you can use this formula, otherwise this formula, EB. Anyhow, E, R, E, B and E, after calculating, you can take them collectively to come up with the overall labor efficiency of the system. So it will be a simple product of E into ER into EB. So assembly line labor efficiency is E into ER into EB. So using this measure of labor efficiency, you can come up with a more realistic value. And as far as the number of workers or number of workstations are concerned, so simply W जो है वो आपका TWC divided by TC है, but if the line efficiency or if the repositioning efficiency or balance efficiency is given, so you can come up with a more realistic value for the number of workers also by using those figures. So TWC जो है वो simply W जो है वो TWC divided by TC है, but the repositioning and balance efficiency, if they are there, so you have to multiply the TC with those values also. And TC को भी in terms of, अगर आप जो production rate वाला formula है, this one, you can find E and then you can find put in this value. So finally आपका जो आ जाएगा TC is 60E divided by RP. ठीक है ना. सो RP ऊपर चला जाएगा और 60E जो है TC की जगह आ जाएगा. ठीक है ना. सो 1 by TC is basically RP divided by 60 into E. ठीक है ना. बाकी वही चीज़ है. So you can use this formula, you can use this formula, or you can use this one. So as ER into TC is TS. यहाँ से आप निकाल सकते हैं ER और TS TC का जो रिलेशन, तो ये आपके पास आ जाएगा. So that will depend on the parameters which you will have. ठीक है ना. सो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन रेट है और 3 एफिशिएंसीज है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे. अगर ये वैल्यूज़ हैं तो ये आप कर सकते हैं. सिमिलरली यू कैन यूज़ दीज वन. सो एनी वन कैन बी यूज्ड. फाइनली ये तो वो पैरामीटर्स थे जो कि आपसे पूछे गए थे, और अगर एफिशिएंसीज गिवन हो और एफिशिएंसीज आपने फाइंड करनी हो तो ये फार्मूलेशन जो है वो आप कर सकते हैं. फाइनली the other part of the problem was the line balancing, कि आपने लाइन जो है वो बैलेंस करनी है so as to achieve that particular demand rate which is 100,000 units per year. So for line balancing we have 3 standard algorithms available जो कि normally use की जाती है. Largest candidate rule है एक, other is Kilbridge and Wester method, and third one is rank positional weights method. So we will discuss them one by one. So let us first start with the largest candidate rule. Largest candidate rule में basically there are 3 or 4 steps involved in each method, and the only difference between these 3 methodologies is the first step. First step जो है वो तीनों में different है, and then the remaining steps are exactly the same. So once you know one rule, so you will easily then understand the other two. So the steps that are involved in largest candidate rule are these. Just
list them first. First step is the arrangement of the table that was given to you. So it was a random table, and they were arranged on the basis of the operation number. Okay, operation number 1, 2, 3, 4, 5. So you have to rearrange the table in terms of the TEK value, and that rearrangement will be in the descending order. So TEK values क्या हैं? ये operation times है. Largest, as the name implies, that we will try to assign the largest candidate first. Largest candidate means those operations or those candidates whose operation time is maximum. This is because if you have left with operations which will have minimum processing time, so then it becomes very easy for us to adjust those small operations in different slots with different workstations. ठीक है ना. सो अगर एक मशीन में आपके पास टाइम स्लॉट अवेलेबल है और आपके पास कम टाइम वाला ऑपरेशन भी अवेलेबल है, तो आप इजीली फिर उसको असाइन कर सकते हैं. अदरवाइज, फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव a time slot left in a workstation, for example, 0.2 minute का टाइम आपके पास अवेलेबल है, and suppose you have a candidate whose processing time is 0.5 minutes, so which is greater than 0.2 minutes, so वो आप assign नहीं कर सकेंगे, and eventually you will have to then introduce another workstation within the system, क्योंकि आपने उस डिमांड रेट को अचीव करना होगा. So let me first read out all the steps. So the first step is that you will have to rearrange the table in descending order of the TEK values. Then after a rearrangement of the table, simply you will have to start with the top of the table, and then you will select the feasible element that can be assigned to the workstation. ठीक है ना. सो आपके पास ऑपरेशंस आ जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, टाइम ऑपरेशन टाइम के रेफरेंस से, और फिर उसमें से आपने सिलेक्शन करनी होगी कि कौन सा ऑपरेशन जो है वो किस वर्कस्टेशन को आप असाइन कर सकते हैं. फिजिबल एलिमेंट मीन्स आपने एक दो आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपकी जो कंडीशंस है, वो आपने फॉलो करनी होगी. ठीक है ना. एंड कंडीशंस आर टू. वन इज़ द टाइम स्लॉट, के टाइम कितना अवेलेबल है वर्क स्टेशन पे, और दूसरा जो एलिमेंट आप असाइन करेंगे क्या वो प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा. प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट मीन्स जो सीक्वेंस है वो आपका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा. ठीक है ना. सो यू मस्ट फॉलो द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. इन एडिशन टू दैट you should also take care of the available time in a machine के जो अवेलेबल टाइम का स्लॉट आपके पास है क्या उसमें वो एडजस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता. एंड फॉर दिस एग्जांपल द एक्चुअल अवेलेबल टाइम विच इज़ द साइकिल टाइम इज़ 1 मिनट इन आवर केस. ठीक है ना. टी से हमारा 1.08 आया था, लेकिन 0.08 जो है वो उसमें रिपोजिशनिंग टाइम है, तो वो सब्ट्रैक्ट करके actually you will have 1 minute. So you will have to adjust those operations keeping that 1 minute time interval in consideration. And this is the second step, and it is the assignment of the feasible work element to a workstation. So once you assign an operation, then the third step is again the second one. So you will again have to go back to the top of the table, and then you will look for another feasible element, and that will be assigned. ठीक है ना. So step number 2 और step number 3 जो है वो फिर आप repeat करेंगे.
So you will understand these steps through the rest of the slides. So this is the first step, the work elements arrangement, and that arrangement is according to the descending order of the TEK values. ठीक है ना? सो इस टेबल में अगर आप देखें तो वर्क एलिमेंट नंबर 3 जो है, यानी जो ऑपरेशन नंबर 3 है, उसका ऑपरेशनल टाइम सबसे ज़्यादा है, विच इज़ 0.7 मिनट्स, एंड देन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ TEK वैल्यूज़ में है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप देखें तो टेबल में टॉप पे आपका फर्स्ट जो है वो वर्क एलिमेंट 3 आ रहा है, फिर 8 है, 11, 2 एंड सो ऑन. और उसके जो भी टेबल में गिवन था प्रीडिसेसर, वो डेटा भी जो है वो आप इस टेबल में लिस्ट कर लेंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. एंड नाउ सेकंड स्टेप इज़ असाइनमेंट ऑफ द वर्क लोड टू द वर्क स्टेशन. और असाइनमेंट जो है दैट they are the assignment of these jobs or these operations basically to the workstation. So finally, when you assign the operations to the workstations, this will be the final result. Your result will something look like this table. इस टेबल में अगर आप देखें तो आपके पास 5 वर्क स्टेशंस आ रहे हैं, और थ्योरेटिकली जब आपने फाइंड किया था तो दे वर 4. सो दिस मीन्स दैट प्रैक्टिकली जब आप असाइनमेंट करेंगे तो आपके पास लॉसेस आएगी, और ये असाइनमेंट जो है दे वर आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल अवेलेबल टाइम विच इज़ द TS वैल्यू, एंड TS इज़ 1 minute. ऑन द बेसिस ऑफ 1 minute cycle time, the total number of workstations or the total number of workers you can say comes out to be 5. और फिर स्टेशंस, हर एक स्टेशन को, ये सिर्फ मैं फाइनल रिजल्ट इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ कि यू अंडरस्टैंड द सिनेरियो. सो द टेबल दैट यू विल मेक आफ्टर द फर्स्ट स्टेप इज़ दिस वन. ठीक है ना? आप एक सिंपल टेबल बना लेंगे विच विल हैव दीज 4 कॉलम्स विद द लेबलिंग स्टेशन, वर्क एलिमेंट, थर्ड आपका TEK वैल्यू होगी विच इज़ इन मिनट्स, और स्टेशन टाइम. स्टेशन टाइम इन दिस केस इज़ 1 minute. ठीक है ना? हमारे पास TS जो है वो 1 minute है, एंड दैट 1 minute इज़ द अवेलेबल टाइम. फिर आपने असाइनमेंट करनी होगी. तो अगर लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल के थ्रू मैं असाइन करता हूँ ऑपरेशन, तो स्टेशन नंबर 1 को 4 ऑपरेशन जो है वो असाइंड है, 2, 5, 1 और 4, एंड दिस इज़ बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ दोज ऑपरेशंस विच मस्ट बी परफॉर्म. और फाइनली यहाँ पे अगर आप देखें तो इस मशीन का जो टोटल यूटिलाइजेशन टाइम है वो एग्जैक्टली 1 minute है. सो 1 minute मीन्स दैट इट इज़ 100% यूटिलाइज्ड. फिर सेकंड वर्क स्टेशन है, और सेकंड वर्क स्टेशन को अगर आप देखें तो 2 ऑपरेशंस या 2 वर्क एलिमेंट्स जो है वो असाइन किए गए हैं, और इनकी यूटिलाइजेशन अगर आप देखें तो 81% है. तो दिस मशीन इज़ अंडर यूटिलाइज्ड, है ना? ऑलमोस्ट 20% टाइम जो है उसका आइडल टाइम है. 3 को अगर आप देखें तो 98% है. सो दीज आर बेसिकली मशीन यूटिलाइजेशंस. सो लेट मी नाउ स्टार्ट विद दिस टेबल. सो पहले तो आप टेबल जो है वो बना लेंगे लाइक दिस, 4 कॉलम्स और स्टेशन, वर्क एलिमेंट, TEK और स्टेशन टाइम आप देखेंगे. देन ये जो फर्स्ट एलिमेंट आपने असाइन करना होगा, ये आप किस तरह करेंगे. सो दिस इज़ द सेकंड स्टेप. सो फॉर असाइनमेंट यू मस्ट हैव एट लीस्ट 1 स्टेशन, यानी एक स्टेशन तो आपके पास सिस्टम में होगा, सो एज टू कंप्लीट दीज टास्क्स. ठीक है ना? अगर एक वर्क स्टेशन के थ्रू आप ये सारे ऑपरेशन करते हैं तो भी ठीक होगा. दैट विल डिपेंड अगेन ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बट ओवरऑल you can say that
you must have at least uh, one machine in. Okay, there were some issues, so that's why I paused the video. So let me start again with the second step. Uh, so I was talking about the number of workstation. So at least you should have one workstation within the system so as to start your work. So for that, you have to install one workstation. Let me start the presentation. Uh, so this is the rearranged table, and as I said that you will have to start from the uh, top of the table, and we'll look into the first feasible element that you can assign to the first workstation. So फर्स्ट एलिमेंट को अगर आप देखें एंड व्हाट विल बी द feasible element will be that element which will not violate the precedence rule and the time rule. टाइम रूल आपके पास 1 मिनट है अवेलेबल, और प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट ये होगी कि अगर एक एलिमेंट आप असाइन करते हैं तो उसका प्रीडिसेसर पहले असाइन होना चाहिए एक मशीन को. So now if we start from the top of the table, so the first work element is work element number 3. Its operational time is 0.7 minutes. So this means that we can assign this particular work element because the first machine that will be available has not yet been assigned any other वर्क. सो पूरा का पूरा स्लॉट जो है वो अभी फर्स्ट मशीन पे आपके पास अवेलेबल है विच इज़ 1 मिनट. सो 0.7 मिनट का टास्क जो है वो आप असाइन कर सकते हैं. बट इफ़ यू लुक इनटू द प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट, सो इट्स प्रीडिसेसर इज़ 1, और ऑपरेशन नंबर 1 जो है वो अभी असाइन नहीं हुआ. So this means that you cannot assign this particular work element yet. Now the second work element वो भी आप assign नहीं कर सकते because it also has the predecessor. So this means that the first element that you can assign to the first machine will be an independent operation. यानी वो ऑपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑपरेशन हो, विच इज़ ऑपरेशन नंबर 2 एंड ऑपरेशन नंबर 1. ठीक है ना. सो ये आप असाइन कर सकते हैं या आप 1 असाइन कर सकते हैं. एंड नाउ दिस असाइनमेंट विल बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ रूल दैट यू आर यूजिंग, एंड वी आर यूजिंग द लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल. लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल में we have arranged this table in terms of TEK values in descending order. So we try first to assign those work pieces, those operations which have the maximum time. So in the table, the first feasible that comes in my listing is operation number 2, which has no predecessor and its operational time is 0.4 minutes. So I can assign this particular operation to the first workstation. So जो आपका table होगा, which is this one, which will be consisting of these 4 columns: station, work element or TEK values or station time. So station number 1 आपने जो है वो start कर लिया है, and you have assigned work element number 2 to this particular station. Its operational time is 0.4 minutes. So 0.4 minutes का slot जो है वो अगर आप 1 minute से निकाल लें, so still you have 0.4 minutes, not 0.4 minutes, 0.6 minutes available. ठीक है ना. So इस station का जो अभी operational time है वो 0.4 minutes है.
और टोटल टाइम आपके पास 1 मिनट है. सो स्टिल यू हैव 0.6 मिनट्स slot left in this particular workstation. So as I told you that you have to repeat step number 2 and step number 3. स्टेप नंबर 2 में आपने स्टार्ट से लेके स्टेप नंबर 3 पे जब आपने असाइन कर दिया है तो यू अगेन हैव टू गो बैक टू द टॉप ऑफ द टेबल सो दैट हो सकता है कि कोई ऐसा अब वर्क एलिमेंट हो जिसका प्रीडिसेसर 2 हो, है ना. सो 2 आपने ऑलरेडी असाइन कर दिया है. सो नाउ you will be able to select that operation whose predecessor will be or would be operation number 2. You know? So what I will do is that after assigning this work element to the first workstation, I will go back to the top of the table. This arrow, red arrow, indicates that you have to start from the top of the table. So go back to the start of the table and then again look for the second feasible element that you can assign. So now I can assign that element which will either be independent या तो उसका कोई predecessor नहीं होगा और या वो element जिसका predecessor 2 है. And second restriction is that of our time. The time slot that is now available is 0.6 minutes because यहाँ पे 0.4 मिनट के लिए ये मशीन बिजी होगा. 0.6 मिनट का टास्क जो है वो आप असाइन कर सकते हैं. So I will look for the elements which will have operational time 0.6 minutes or less than 0.6 minutes. ठीक है ना. So ये 0.7 को तो हम असाइन ही नहीं कर सकते. ठीक है ना. So I will look for the second which is 0.6. It can be assigned, but their predecessors are 3 and 4. And operation number 3 and operation number 4 are not yet been assigned to any of the workstations. So I cannot assign this work element. So the next is 0.5 minutes. 0.5 minutes can be assigned because we have 0.6 minutes. But again, their predecessors are 9 and 10, which are not yet been assigned. नेक्स्ट जो है वो सेकंड है वो ऑलरेडी हमने असाइन कर दिया है. उसके बाद जो है दिस इज़ वर्क एलिमेंट नंबर 10. वर्क एलिमेंट नंबर 10 का भी प्रीडिसेसर जो है 5, 8 है जो कि अभी असाइन नहीं हुआ. द नेक्स्ट कैंडिडेट इज़ वर्क एलिमेंट नंबर 7. इसका प्रीडिसेसर 3 है जो असाइन नहीं हुआ. नेक्स्ट कैंडिडेट इज़ 5. वर्क एलिमेंट नंबर 5 इसका प्रीडिसेसर जो है वो 2 है. सो 2 हैज़ ऑलरेडी बीन असाइंड टू दिस वर्क स्टेशन. सो दिस मीन दैट नाउ वी कैन असाइन दिस ऑपरेशन टू द फर्स्ट स्टेशन आल्सो. Its operation time is 0.3 minutes and the available time within this slot is 0.6 minutes, so we can assign this. So the next feasible element that we can assign is वर्क एलिमेंट नंबर 5. ठीक है ना, दिस वन. ठीक है ना. सो 5 जो है वो आप असाइन कर सकते हैं. तो these will be now the sequence of operations. So we have started with the second operation. It will be assembled to the base component and then work element number 5 will be assembled. Its assembling time is 0.3 minutes और 0.4 और 0.3 को आप add up कर ले. So you come up with 0.7. 0.7 means that still you have 0.3 minute time slot left in workstation number 1. So after selection of a feasible element, मैंने आपको कहा था कि it is a repetitive process, so you have to go back to the start of the table and then again look for the next feasible element. So now we have a time slot of 0.3. So simply look for the elements whose operational time is 0.3 or less than 0.3. ठीक है ना. So यहाँ पे आपकी लिस्ट आ रही है. So beneath that you can select some of the elements. So अगर मैं 9th को अगर आप देखूँ तो its
predecessor is 6, 7 and 8, which has not yet been assigned, so we cannot assign this one. Next is operation number 1. 0.2 minute का slot है. I can assign this and it has no predecessor. So this is the most feasible element within the list that I can assign to this particular station. So my next selection for station number 1 will be this one. So work element number 1 and its operation time is 0.2, and the total time for which this station will be busy is now 0.9 minutes. 0.4 plus 0.3 plus 0.2 is 0.9. Still we have 0.1 minute slot available in this particular workstation. So now we can look for an element which has an operation time equals to 0.1 minute or less than 0.1 minute, which is the only candidate in the last, जो कि वर्क एलिमेंट नंबर 4 है. तेरी स्टेप वही होगा कि आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द फिजिबल एलिमेंट सिंपली गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ द टेबल एंड देन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर look for the feasible element. So 0.1 minute का है. If you look into the predecessor, so 1 or 2, 1 and 2 both operations have been assigned. So this means that this candidate is fulfilling both the requirements, the time slot requirement and the precedence requirement. So this candidate can also be assigned to the first workstation. So we will have workstation number 1 in assembly system which will perform 4 different tasks, and these are the sequence of those tasks and the operational time. Now what? Operation station number 1 को अगर आप देखें तो this station has now been fully utilized, 100% utilized कर दिया है आपने, because we do not have any additional slot within this particular workstation. So this means that eventually you will have to install another workstation in this system so as to achieve that particular demand. We can assign more operations to station number 1 also, but it will increase this cycle time of the system. So अगर आप cycle time increase करते हैं, this means that you will be reducing the production rate. The production rate आप reduce करेंगे means that you will not achieve the desired demand rate, जो कि 100,000 unit. So basically you are designing a system to achieve that particular demand rate, which is 100,000 units per year, with a cycle time of 1 minute. So now you have to install a second workstation. अब second workstation आपने install करना होगा और उसको आपने assign करना होगी, ठीक है ना. So ये आपका last candidate था. So simply go back to the top of the table and now look for the first feasible element. So अब work element number 3 को अगर आप देखें तो now for the next machine we have 1 minute time, you know, because no work has yet been assigned to the second workstation. So इसका टाइम अगर आप देखें ऑपरेशनल टाइम 0.7 minutes है, and the available time is 1 minute, so we can assign this. Now look for the predecessor, it is 1. So 1 has already been assigned to the first workstation. So this means that now we can assign this work element to the second workstation. So our next assignment will be, this red color shows the assignment of the second workstation. So work element number 3 can be assigned to this workstation. Its operational time is 0.7 minute, and this machine whole operational time comes out to be 0.7. 0.7 means 0.3 minute का टाइम या स्लॉट जो है अभी आपके पास इस वर्कस्टेशन में अवेलेबल है. So now you can again look for another
element whose operation time is zero point 0.3 or less than zero point 0.3, and if it also fulfills the predecessor, the precedence constraint criteria, so then you can assign that element to this workstation also. So now again starting from the top of the table, so the next available element is work element number 8. उसका predecessor अगर आप देखें तो 3 और 4 है. So we have assigned third and fourth element. So precedence requirement आपकी fulfill हो रही है, but if you look into the time slot, so this operation has a processing time of 0.6 minute, which cannot be assigned to this workstation because the available slot is 0.3 minutes. So अगर ये आप assign करेंगे, again you will be increasing the cycle time of the system, which will directly affect the production rate. So this cannot be assigned. This can be assigned, but it is not the feasible element that you can assign to workstation number 2. Next is 11. 11 जो है 0.5 है. So simply you can look for a candidate whose operation time is 0.3 or less than 0.3. So 0.3 का slot जो है वो यहाँ से start हो रहा है. So the next fifth has been assigned. Ninth element को अगर आप देखें 0.27 है, but their predecessors are 6, 7 and 8 जो कि अभी assign नहीं हुए, तो you cannot assign this. Next is one assign हो गया है operation number 12. Operation number 12 का predecessor जो है 11 है, आप नहीं कर सकते. Next is 6. 6 आप assign कर सकते हैं because its predecessor is 3 and 3 has been assigned to this particular workstation. So the next feasible element that we can assign to this second workstation is work element number 6. Okay? And its operation time is 0.11 or 0.81 है. Again, we cannot now assign any further task to this workstation because there is not a single feasible element available right now which can be assigned to this one. So eventually you will have to go for a third workstation also. So you have to install a third workstation in the system. और third workstation जो है वो वही प्रोसीजर होगा starting from top of the table. 3 और 4 जो है वो आप assign कर चुके हैं. So now you can assign the 8th element whose processing time is 0.6 minutes. This one, और 0.6 मिनट के लिए आपने जो है इसको बिजी कर दिया है. So still you have a time slot of 0.4 minutes. So now look for a candidate whose time will be equal to 0.4 or less than 0.4 and who will fulfill the precedence requirement also. So 0.4 से नीचे अगर आप देखें तो 10th element जो है वो available है, but their predecessors are 5 and 8. 8 has been assigned. 5 को अगर आप देखें तो 5 has been assigned. So this means that you can assign this work element number 10 to this machine. So 10 जो है वो आपने assign कर दिया, and similarly the rest of the machines can be. So this will be your final answer, and this is that simple 3-step scenario that you will adopt using the largest candidate rule. So now actually अगर आप देखें तो theoretically जो आपने find किया था, so we had found, we come up with a solution of 4 workers and 4 workstations. But actually when you take into consideration the precedence requirements, the sequence that must be adopted, and the available time slot which is 1 minute, so based on that the actual solution is for actual scenario is 5 workers, or you can say 5 workstation within that system. So once you come up with the balanced solution, so which is this one,
and you can see the utilization of the machines के machine number 1 जो है वो 100%, this is basically the Excel file that I have generated, 100% है, 81% है, 98% है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो you have some how even distribution of the workload among the first 3 workstations. बट इंटेंशनली ग्रूअर की बुक में ये एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरह का डेटा गिवन है कि none of the rule will give you a good solution, which you can say. So it is an average solution in which you can see that जो वर्क स्टेशन नंबर 4 है और वर्क स्टेशन नंबर 5 है, they are quite अंडर यूटिलाइज्ड. यानी इसकी यूटिलाइजेशन अगर आप देखिए 60% है, इसकी भी ऑलमोस्ट 60% है. यानी फॉर 40% ऑफ द टाइम these machines will be idle, which is not a good solution. But this is because of the data provided by the book. So finally, you will show these arrangements on the precedence diagram. So for example 1 को अगर आप देखें तो इसमें 2, 5, 1 और 4 का सीक्वेंस है. तो this is the precedence diagram, and assignment of the work element of station number 1 are these 4 elements. ये station number 2 है. This is station number 3, which will perform the 8th and 10th task. Station number 4 जो है उस पर 7th और 9th एलिमेंट असम्बल होंगे. एंड फाइनली आपके पास जो 5th स्टेशन है उस पर वर्क एलिमेंट नंबर 11 और 12 असम्बल होंगे. सो दिस इज़ द assignment of the operations on the precedence diagram, and this will be the actual physical sequence of the assembly system that you have designed. So आपके पास जो physical sequence होगा, arrangement होगी actual scenario में, it will be 5 workstations arranged in a sequence, and these are the sequence of operations that will be performed. So main conveyor जो होगा system में, in which the base frame will be loaded onto the main conveyor system. It will route that to the first station, और सब conveyor system में एलिमेंट नंबर 2, 5, 1 और 4 जो है ये इस सीक्वेंस में आएंगे, एंड दे विल बी असेंबल्ड. सो फर्स्ट work element number 2 will be assembled to the base component, then work element 5, 1 and 4. So similarly, this physical representation of the figure gives you both the sequences, that is sequences of the machines and then sequences of the operations on each machine, or you can say on each workstation. So this is how you will balance the scenario or the system using the largest candidate rule. Finally, जब बैलेंस एफिशिएंसी की तरफ आप जाएंगे तो बैलेंस एफिशिएंसी का वही, चूँकि टोटल वर्क कंटेंट टाइम भी अवेलेबल है, TS भी आपके पास आ गया है which is 1 minute, और टोटल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन भी आपने जो है वो फाइंड कर लिए हैं which is 5. So the balance efficiency for this system is 80%. 0.8 means कि बाकी जो 20% है वो आपके delays हैं. So if you have a system in which there are 20% delays, means that it is not a good system. Normally यही जो है वो assume किया जाता है कि if the efficiency is more than 95%, so that will be a good system. So that's it. In the next video, we will cover the next 2 algorithms, which is the Kilbridge and Western method and the rank positional weight method. So that's it for this video. Thank you very much.